वेलकम बैक टू द अबीर अकेडमी और आज हम बात करेंगे लेटर्स एंड सिंबल सीरीज की। सो लॉजिकल रीजनिंग जो क्वेश्चंस ऑन द टेस्ट दे टेस्ट योर रीजनिंग स्किल्स इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग आर्गुमेंट्स, evaluating arguments, or formulating or evaluating a plan of action. These questions test your ability to read and understand the logic presented in brief passages, statements, or conversations based on materials from a variety of sources. Lekin you don't need to be familiar with any subject matter beforehand. Letter and symbol series are sequential orders of letters, numbers, or both arranged in such a way that each term in the series is obtained according to a specific rule. So लेटर एंड सिंबल सीरीज जो होते हैं उसके जो आपके पास एक लेटर्स का ऑर्डर दिया होता है लेकिन वो किसी पैटर्न के अकॉर्डिंग होता है, आपको वो पैटर्न जो है वो क्रैक करना होता है. So they can be based on mathematical operations या फिर based on alphabetical order वगैरह. जैसे कि एग्जांपल देखते हैं कि अगर अल्फाबेट पोजीशंस हैं, फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 1 हो जाएगी, c इज इक्वल टू 26 हो जाएगी, इसको यूज करना हो सकता है. अरिथमेटिक ऑपरेशन यानी +2 -2 इस तरह को, या फिर ऑल्टरनेटिंग सीरीज या ग्रुप जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं. अब एग्जांपल देखो कि जैसे a d g और j दिया हुआ है. अब आप देखो कि इसके अंदर a के बाद a की 3 पोजीशंस के बाद यानी a b c देन d आता है, e f फिर g आता है. सो आपके अंदर अल्फाबेट्स +3 हो रहे हैं, उसके बाद आपकी पोजीशन जो है वो नेक्स्ट की आ रही है. सो जे के बाद क्या आएगा, जे के एल एंड देन एम. सो वी आर यूजिंग द +3 का पैटर्न, और जो +3 अल्फाबेट की पोजीशन होगी वो आंसर होगा.